Okay, 1A handout होगा आपके पास. Day 1 में 1A handouts है. If you could read that, सबसे पहला handout, yes, जो आपके पास है. Read handout 1A. So I don't think we have much time. So next slide. Alright, ये देखिए continuous professional development. You can read that afterwards because already we are late. और अगर ऐसे करेंगे ना तो कल 5 बजे तक नहीं बैठ जाएंगे. Okay. So NEP mandate है. It's mandatory for everybody. What? Continuous professional development of teachers clause 5.15 में कहती है. भाई क्या कहती है कि continuous professional development होते रहना चाहिए. CPD होते रहना चाहिए. उसका फायदा क्या है? ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम लोग अटेंड कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फायदा ये है सेल्फ इम्प्रूवमेंट. व्हाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट? बिकॉज आप कुछ भी नया सीखते हैं, अपने आप को ग्रूम करते हैं. कुछ भी नई चीज नई बात कुछ भी सीखते हैं तो ग्रूम करते हैं अपने आप को, उससे आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं. नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती है. सो इवन इफ यू आर हियर फॉर 2 days ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप 5-10 घंटा दे रहे हैं और 10 घंटे में सिंसियरली आपने 10 बातें भी सीख ली, बहुत बड़ी बात. ठीक है, वो 10 बातें कभी भी वेस्ट नहीं होंगी, वो आपके फायदे के लिए होंगी. सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लर्न न्यू इनोवेशंस एंड एडवांसेस. हमारे एजुकेशन फील्ड में क्या-क्या न्यू एडवांसेस है, क्या-क्या चीजें नई आ रही हैं, वो जानने का मौका देता है सीपीडी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट. बिकॉज़ आई टेल यू वन थिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग आई, आर्ट्स इंटीग्रेशन आई, ये हम लोग को पता नहीं था कि एक्चुअली क्या होता है. बट व्हेन वी आर अटेंडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कौन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसको कहते हैं. तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाके वी गेट एक्सपोजर और उससे मालूम पड़ता है कि ओके ये टर्म जो है ये एक छोटा सा टर्म नहीं है, बस उसकी डिक्शनरी भी नहीं जाननी. एक्चुअली क्लास में उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हमें बताता है हमारा सीपीडी, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट. Learn through multiple modes of training, face to face as well as online. So CPD में ये भी है कि जरूरी नहीं कि आप face to face और face to face training करें. जैसे face to face training है, you can see me, I can see you in reality. तो ये face to face training mode है. दूसरा ट्रेनिंग मोड है आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग मोड. और एक और ओपन ट्रेनिंग मोड होती है जिसमें कि वेब कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जिसमें कि आप ऑनलाइन भी रहते हैं बट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट. So, हर तरह के मोड से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं. You're not stuck in one only कि नहीं यही करना है. तो 3 मोड्स हैं आपके पास, तीनों में से किसी भी ट्रेनिंग कर सकते हैं. Now we have sharing ideas best practices. As I said, no, जब CPD होती है ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम जब भी मिलते हैं, so as you like we will be here for 5 hours, tomorrow again 5 hours, 10 hours. So कुछ बातें मैं आपसे जानूंगी, कुछ बातें आप मुझसे जानेंगे. हो सकता है कुछ ऐसी चीज आप अपने क्लास में कर रहे हो, अपने स्कूल में कर रहे हो जो I'm not aware of. So I can take it from you. That is the best part. That's why you've written over here, sharing ideas and best practices, which is happening in your school and is not happening in my school. That we can take. Then we have practice competency-based education related pedagogies. Now, NEP का बहुत focus है competency. Competency मतलब होता है काबिल बनाना. Here we are not. NEP says ये नहीं कि रट्टा मारिए, एग्जाम में जाइए, एग्जाम में लिखिए, मार्क्स लीजिए. NEP says कि नहीं, आप बच्चों को क्यों हम लोग MCQ क्वेश्चन बहुत दे रहे हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नॉट इजी. अगर आप क्वेश्चन टर्न करके दीजिएगा, जब तक इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी बच्चों को, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं. Isn't it? So NEP says competency based education होनी चाहिए. Make your child competent. काबिल बनाइए. काबिल बनाने के लिए that's why we have different forms through which we can actually teach in the classroom. और आप आर्ट्स इंटीग्रेशन करा लीजिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवा लीजिए, इंटीग्रेटेड थ्रू स्पोर्ट्स करवा लीजिए. डिफरेंट मेथड्स हैं. More of quizzes, more of activities in the classroom ताकि बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो. फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट नहीं हो. फिजिकली भी प्रेजेंट हो, मेंटली भी प्रेजेंट हो, ताकि पूरा एक्सट्रैक्ट करके बच्चा लेके जा सके. So all these will come to know through these CPD programs. So next. Alright. Continuous professional development of teachers as per CBSE notification नंबर 16 जो 24 सितंबर 2021 को सर्कुलर आई थी, उसमें क्या कहा गया था? टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन 50 आवर्स ऑफ सीपीडी, दैट इज मैंडेटरी. 50 घंटे की ट्रेनिंग आवर्स आपको कंप्लीट करनी है. एज पर देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट, उसमें भी डिवाइड नीड्स एंड इंटरेस्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास n नंबर ऑफ
ट्रेनिंग टॉपिक्स है, उसमें अपने हिसाब से आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। Then we are out of these 50 hours, CPD of 25 hours shall be completed by the teachers in the programs organized by the board or by the state government or government regional teachers training institutions. आप लोगों को ये चीज पता ही होगी, जब 50 घंटे की बात करते हैं, 50 घंटे में 25 घंटे सीबीएसई ट्रेनिंग होती है और 25 घंटे इन हाउस ट्रेनिंग होती है। इन हाउस ट्रेनिंग मतलब कि आपके स्कूल में वो टीचिंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हुई हो और आपकी जो पीआरटी है वो ले रहे हैं उस ट्रेनिंग। So remaining 25 of CPD which shall be organized by the respective school in collaboration with school complexes. अब आप अगर आपकी पीआरटी है या फिर आपका स्कूल जो है किसी स्कूल कॉम्प्लेक्स, लाइक हमारा पटना में भी है पाटलिपुत्रा सहोदया, so we are associated with that. हो सके आपके लिए यहाँ पे क्या है सर? सारा सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स। So हर एक अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग-अलग स्कूल कॉम्प्लेक्सेस है, उससे भी आप मर्ज करके इंटीग्रेट करके आप ट्रेनिंग कंप्लीट करवा सकते हैं, ट्रेनिंग आवर्स कंप्लीट करवा सकते हैं अपनी। So next slide. LP mandate on कर, ये तो हो गया। Next. Alright. LP mandate on continuous professional development of teachers clause 5.16. Clause 5.16 of LP emphasizes the need for leadership and management training of school leaders and management heads. The school leaders will also undergo similar trainings on content and pedagogy for preparing pedagogical plans based on competency education for the institutions and for sharing best practices. Now, 5.16 clause ये भी कहती है कि 90 सिर्फ टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, स्कूल लीडर्स, प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स सबकी ट्रेनिंग होगी। Why सबकी ट्रेनिंग होगी? What is the ultimate purpose? Ultimate purpose यही है, pedagogy, the way of teaching in the school, the way of teaching in the classroom should be improved. Ultimate purpose यही है, बच्चों को best of best मिले। अगर बच्चे स्कूल आ रहे हैं, they should not be confined to the old methods of teaching. So lecture method वो नहीं होना चाहिए, कुछ नया innovative बच्चों को मिलता रहना चाहिए। That is the ultimate purpose for preparing pedagogical plans. What is pedagogical plans? Actually your lesson plans and your right, जो कि आप क्लास में कन्वे करते हैं, isn't it? So उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाती है जब आप ट्रेनिंग्स करते हैं। So you can prepare new innovative pedagogical plans that will help the students. And again, competency-based education is the prime focus, and that's why we have CPD going on. So next. Alright, salient features of CPD guidelines prepared by NCERT. NCERT, National Council for Education Research and Training, what it says, let's see that. Objectives of CPD for teachers and school heads, that is mentioned by NCERT. Sensitization of teachers for inculcating ethics, human and constitutional values. ये भी एक प्राइम फोकस है। एथिक्स, बच्चों में जो डिफरेंट एथिक्स से जो लॉस्ट हो जा रहा है वो भी इनकलकेट करने का। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, दे शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द कल्चर, दे शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन काइंड एंड द कंट्री, ये सभी बच्चों में इनकलकेट कराना बहुत जरूरी है। Citizenship education, what are their rights in like environmental protection, human rights, peace and democracy, they should be aware of all these things. हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करते हैं, 17 गोल्स, ये सब बच्चों को मालूम होना चाहिए because they are part of our country. Knowledge of social, emotional and psychological needs of students is for teachers. Again, teachers should be aware of that what is the need of the student. Social, emotional, psychological need of the student. A student is also a social being, is a part of society. What is his need? What he expects from this teacher. Again, a teacher is also, a student is also an emotional being. So how do we behave with them? How do we cater to the needs of the child? ये सब बहुत ज़्यादा important है because again I tell you, as teachers, as principals, we are not dealing with an object. We are dealing with a human being which has emotions and sentiments. बच्चे बहुत sensitive होते हैं, तो टीचर्स को इस बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसा आप अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं कि नहीं मेरा बच्चे को कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, सेम वे यू ट्रीट योर स्टूडेंट्स आल्सो। तो ये सब चीजें भी एज टीचर्स हम लोग को मालूम होनी चाहिए। हाउ डू वी टॉक टू देम, हाउ डू वी एड्रेस देम, दैट इज आल्सो अ रिक्वायरमेंट दैट एवरी टीचर शुड नो, उनको मालूम होना चाहिए। ट्रेनिंग ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड जेनरिक एरियाज एंड थीम्स, यहाँ पे मैंने कहा ना आपके पास चॉइस है, आपके पास एन नंबर ऑफ टॉपिक्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर 22 और 23 का है ना, हाँ 22 टॉपिक्स है जो जेनरिक टॉपिक्स है। जेनरिक टॉपिक्स मतलब कॉमन टू एवरीबॉडी, कोई भी सब्जेक्ट आप आगे वो ट्रेनिंग कर सकता है। एंड देन 23 है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। कुल मिला के हमारे पास 23 + 22 45 टॉपिक्स है ट्रेनिंग की जो आप लोग कर सकते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप लोग उसे कर सकते हैं। नॉलेज अबाउट वेरियस इनोवेटिव पेडागोजीज एंड इंक्लूजन,
इनोवेटिव पेडागोजीज क्या क्या आ रही हैं सीबीएसई में, उसके बारे में जाना। एंड अगेन inclusion is very important. Of inclusion, when I say no, I say how to include each and every kind of student. हर एक बच्चे को, बिकॉज हमारे क्लास में हर एक बच्चा यूनिक होता है, कुछ स्पेशल नीड्स भी होते हैं, और कैसे सबको इंक्लूड करना है सीबीएसई पैटर्न में, कैसे पढ़ाई होनी चाहिए उनकी, वी हैव समथिंग कॉल्ड स्पेशल एजुकेटर्स आल्सो, सो कैसे सबको इंक्लूड करना है, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ गाइडलाइंस प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी। सो नेक्स्ट, knowledge about different innovative pedagogies inclusion, stress free assessment। अगेन हर सीपीटी जो भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफलाइन करते होंगे, आप देखते होंगे कि ट्रेनिंग खत्म, लास्ट पार्ट है आपका फीडबैक एंड असेसमेंट।